أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. As a class, I'm so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who's given me encouragement. I'm so thankful to you people who are also encouraging me. And you people are also giving me some kind of comments on the lectures, so very positive comments. I'm so thankful to Allah again and so thankful to my students. Especially there are some students who are living far away. There are some students who are living in Saudi Arabia and they appreciated me. I'm really thankful to you all people. I'm seriously thankful to my all of those students who encouraged me. I'm so thankful to my family. I'm so thankful to my relatives and my seniors who actually just appreciated me that you will do it, inshallah. Just try to start this video. And I'm thankful to you people, especially because alhamdulillah now the number of the subscribers are also quite high. I've started a few days before this channel, and the way you people have just appreciated is remarkable. So that basically make me more enthusiasm, make me more better. Now the students, you people have asked that the chemical equilibrium, just try to give me that kind of in a quite easy way. So let me introduce the chemical equilibrium, students. As far as the chemical equilibrium is concerned, this question generally comes in a different way in exam, like define chemical equilibrium. Why this is called a dynamic equilibrium? Sometimes this reasoning kind of a question is coming. And the simple definition of chemical equilibrium and how we can put the chemical equilibrium in our daily life example, how the chemical equilibrium can be represented on the graph, right? So these are the few questions when we are going to start our lecture. So today I have decided that I'll give you this all of that your questions step by step. Now, students, as you know that we have studied one more thing. I forget it, and you may not also be forget that. Just try to subscribe my channel so that the next videos you will certainly find in front of you, and you don't wait it because I'm just going to loading the videos. You will just find it. And okay, class, as you know that as far as the reversible and irreversible reactions are concerned, we have already studied it. And after the reversible and irreversible reaction, now the main thing is to study the basic concept of a chemical equilibrium. When we are saying the chemical equilibrium class, that's only the way. I'm going to share the notes of chemical equilibrium in front of you. Like, check it out. When the rate of forward reaction becomes equal to the rate of a reverse reaction. I'm going to read it again so that you will listen me more carefully. What I'm saying, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. What I'm saying to you, I'm simply saying the rate of forward reaction. When the reactant are reacting, right, they're changing into the product. So this is called the rate of the forward reaction. So the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. The rate of reverse reaction class mean the product. Okay, I'll just give you some example to write something over in your screen. Like this, these are the reactant, and the reactants are reacting and changing into a product, right? And the product will change back into the reactant. This was the definition of a reversible reaction. But I'm going to do the tell that the rate at which a rate of forward reaction, matlab rate of forward reaction means that the reactant are going to change into the product, right? And the product are changed into the reactant the same time when the time is the same. This is so called as basically chemical equilibrium. Now you can put another example of a chemical equilibrium in a different way like that. I'm going to tell you. Okay, class. Uh, as far as the second definition, I can say to you like in this way, like a state of a chemical reaction, a state of a chemical reaction in which forward and reverse reaction takes place at the same time. Forward and reverse. This reaction takes place at the same time. This is so called as the chemical equilibrium. What I'm saying, the rate of a chemical reaction in which forward and reverse reaction, they are taking place at the same time. This is so called as the chemical equilibrium. Mind you, class, the chemical equilibrium is also called as a dynamic equilibrium. As I have told you earlier in the introduction of this topic, that this equilibrium is also called as a dynamic equilibrium. When we are saying a dynamic equilibrium, the question arises, what mean
dynamic equilibrium. Okay, the things are so simple class. The dynamic equilibrium mean that basically in equilibrium condition, the reaction is not stopped. The reaction is still going on. We persist, yeah, we just think on our mind that when the reaction, with the rate of forward reaction and the rate of reverse reaction, the time will come in the chemical reaction, it will stop. No class, it will not stop. The reacting parts will still reacting. The product is still going to trying to decompose into the reactants, and the reactants, they're still reacting, and they would like to make a synthesis reaction to the product. So the reaction is not stopped. So that is why this reaction is called, or this equilibrium is called dynamic equilibrium, right? So when we are discussing this, I would like to give one more example. Suppose class, you are going to write this kind of a reaction in which the nitrogen and oxygen, they are changing into a 2NO. Nitrogen N2NO2 change into a 2NO. So this is a kind of a reaction I'm going to show with you. Now, in this reaction class, first of all, we'll try to check which is the forward reaction. The forward reaction, as I mentioned to you, the reaction which is going from left to right. Now, this is the case. This is the forward reaction. So we would like to this write over here in a different way. Okay. As far as this reaction is concerned, class, we'll just put a heading forward reaction, and we'll write the reaction from left to right. The reaction from left to right is so called as forward reaction. So because we are going to write this whole reaction in a different way, I'm going to write in a macroscopic style. So in which I'm going to write a separate way of the forward reaction as well as separate way of the reverse reaction. Then combinedly we will write in a same way as we have started from this reaction. So I'm going to write the forward reaction. Forward reaction, nitrogen N2 going to be react with O2, change into 2NO. So this is the basically forward reaction, right? And going to the reverse reaction. In reverse reaction class, this product which is a 2NO, right? It will come over here and this will be decomposed into N2NO2. We have seen from this example that in case of a forward reaction, the N2 and O2 change into 2NO, and in case of a reverse reaction, the 2NO change into a N2NO2. So this reaction will going further, and the time will come when the rate of N2O2 will becomes equal to the change of the 2NO, and the 2NO will change into N2NO2. So they would have a same rate. They would have a same rate. So at this rate, this is so called as the chemical equilibrium. Now, chemical equilibrium can be represented by a graphical method as well as like in case of chemical reaction class, the reactant we will just start from the, first of all, check it out the graph. X-axis, you will just put the time and concentration on the y-axis. Now those who are the reactant, right, we will just put from the reactant. As you know that the forward reaction, initially the rate of forward reaction is comparatively high, so we'll just try to put from this line from the top, and this line, as the reaction is proceeding, the rate of reaction is a little bit going down and down because the reactant are changed into the product. The product's concentration is going to be increasing. So that is why this graph will go downside and finally it will go further in a straight line. But you know that the time will come when the product's concentration will be raised. So it will start from the zero, but as its concentration is increasing, so time will come and finally it will also attain a straight line. But class, look, this point, I'm going to mention this with the ball pen, that this is the point which shows that indicate a chemical equilibrium. So from this example class, we have just set one more thing in our mind, that the chemical reaction, or when it is proceeding, basically the equilibrium will come when these two lines will touch, combine, right? As this line, this is going further up and up, I mean the products is going up and up, and that's the reactant going down and down, and this mutual point will come. This will attain a chemical basically equilibrium. Okay, one more example class. Let me show one more example. In this case, I give you an example of the N2, NO2 is changed into N2O4. As initially the rate of the reactant is quite high, but with the passage of time it is decreasing. So check it out. Blue line show
that the rate is decreasing of the basically this is N2O4, it is just decreasing. This N2O4 is decreasing. Now this N2O4 will change into the NO2, right? It will change into NO2. So as for NO2 is starting from the zero and its concentration is increasing, increasing, and it will just attain a equilibrium. So this common point, basically when these two basically come at the same time, right? Now this is the common point. This is the common point which I have mentioned with a small dash, that this is the equilibrium achieved. So we can say that class that this is the kind of a thing in which the equilibrium is achieved. Now daily life example, we can put these example in this way, that the percentage of nitrogen remains constant in the atmosphere, which is a 78.09%. Or okay, how just it just persist or just maintain its level. So we have seen that last, the nitrogen which is in a 78% of the atmosphere, right? The green plants utilize this nitrogen and they are making the part of their food, and they are making into proteins, and finally this protein will come in our body, in the animals, right? And after the death of these, all the nitrogen will go back. So in this way, this is also an equilibrium. That particular nitrogen which is coming from the atmosphere going down, the plants are gaining, and the plants, after utilizing, making the part of their food, and finally will take their food, and after death this nitrogen will go to the upside. So there is some kind of a balance. That's also another example of a chemical equilibrium. The second example is the percentage of oxygen remains constant, which is 20.95%. It's an accurate value class. 20.95%. How this basically persists, how this maintains. Don't forget to put an example of the making of glucose from the photosynthesis. That the carbon dioxide CO2 reacts with water, making glucose C6H12O6 plus O2. In this way, the O2 volume will remain constant. And then finally, the O2 will react with basically glucose. It will oxidize the glucose, and in this way the percentage of carbon dioxide will also be remain after the respiration will remain constant, which is 0.04%. So class, from these example we have considered that the equilibrium constant is not only present in our chemistry or in our verbal form, it is practically persists in the nature as well, right? So I'm going to do all of this revision now in Urdu, because some students were just requesting this, just put the whole lecture in English. So, but my maximum of students are living in Pakistan, and also they're not able to learn it properly in English. So I'm going to translate the whole lecture in Urdu right now. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर आ जाए, हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है वो एक लेवल पे आ जाते हैं, उनकी एक सेम स्पीड आ जाती है, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज सो कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको हम थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, क्या कहेंगे हम, a state of chemical reaction in which forward and reverse reaction takes place at a same rate, एक ही रेट पे, तो हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। यानी देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक ही टाइम पे जब वो टेक्स प्लेस करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहने की वजह कि ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हमेशा परसिस्ट रहता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, प्रोडक्ट में डिकम्पोजिशन होने के लिए उसमें भी रिएक्शन जारी रहता है, तो रिएक्शन में तो स्टॉप नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए भी हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड देते हैं। अच्छा, इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को जरा डिटेल से पढ़ें, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ें बच्चों, जब हम किसी भी रिएक्शन को अलग करके, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को अलग करके उसके फॉरवर्ड रिएक्शन को और उसके रिवर्स रिएक्शन को पढ़ते हैं, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, हमेशा अपने ब्रेन में क्लिक कर लें, इसके लिए वर्ड यूज होता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक भी हम पढ़ सकते हैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम की। किस तरह से, सपोज कर लें आपके पास N2 है और O2 है और ये 2NO में चेंज हो रही है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
इस रिएक्शन को हम सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं। पहले देखिए हम इसको जब फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्टेंट कौन से N2 और O2 है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो 2NO में चेंज हो रही है। तो रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लिखेंगे इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब क्योंकि हम इसको मैक्रोस्कोपिक में क्यों पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं कह रहा हूं मैं, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक लेवल में फॉरवर्ड और रिवर्स को मैं अलग लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं फुल एरो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हाफ एरो फॉरवर्ड हाफ एरो रिवर्स यूज किया, अब मैं फुल एरो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो N2O2 चेंज इनटू 2NO, ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अगर इसमें मैं जो प्रोडक्ट है 2NO ये डीकंपोज होगी तो इसको मैं रिवर्स रिएक्शन में इस तरह से लिखूंगा, द रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, वो कैसे आएगा 2NO, इसमें भी अब मैं फुल एरो लगाऊंगा N2 प्लस O2 आ जाएगा। तो इसे मैं जब इस ओवरऑल रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा तो जैसे मैंने टॉप पे लिखा हुआ है कि N2 प्लस O2 चेंज इनटू 2NO, तो इस तरह ये हम पता कर सकते हैं कि इस स्टेज पे जैसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था, यानी ये जो स्टेज है आपकी ये केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर रही है कि यहाँ पे रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, आपने ग्राफ बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ बनाना है। याद रखना है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियली ज्यादा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेट कम होता जाता है। तो यहाँ से हम उठाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इनिशियली ज्यादा था, तो देखिए टॉप से शुरू हो रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है, ये देखिए ये ग्राफ नीचे आ गया और फिर फाइनली ये ब्लू लाइन आपको शो कर रही है इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है। और इसी तरह से देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या होता है, कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है, तो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि ऐसा सब बढ़ती है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए थे ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। तो प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो देखिए ग्राफ प्रोडक्ट का बढ़ रहा है और एक टाइम विल कम, ये इसमें आ जाएगा साइड में। अब इन देखें दोनों में वो पर्टिकुलर साइड, वो पर्टिकुलर लाइन जिसमें दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं उसको हम इक्विलिब्रियम की बोलते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इसको मैं एक एग्जांपल आपको और दे सकता हूँ कि देखिए सपोज कर लें कि आपके पास N2O4 है, ठीक है, ये N2O4 जो है आपने इसको मतलब ये रिएक्टेंट के तौर पे यूज हो रही है। तो देखिए N2O4 मैंने ब्लू लाइन से शो किया है और N2O4 की कंसंट्रेशन देखिए टॉप से बॉटम की तरफ ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये आगे फर्दर जा रही है, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो कंसंट्रेशन अब बढ़ रही है वो NO2 की है, बट NO2 की इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी, प्रोडक्ट है ना ये, तो प्रोडक्ट में इसकी कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, द टाइम विल कम ये इसकी कंसंट्रेशन सेपरेट। अब इन दोनों के वो पर्टिकुलर टाइम जब इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएगा, यानी जितना NO2 बेसिकली बने या N2O4 से NO2 बना उतना NO2 से वापस N2O4 बन रहा है, इसको हम बोलेंगे बेसिकली दिस इज सो कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अच्छा, इन दो ग्राफ से आपको ये तो पता चल गया कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से एक दफा आपको टिप बताने लगा हूँ, याद रखिएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ लिखना होता है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट करनी होती है क्योंकि प्रोडक्ट शुरू से रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता चला जाता है। वन मोर थिंग, डेली लाइफ से हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जी बिल्कुल दे सकते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन की देखिए 78% है और वो मेंटेन रहती है। कैसे मेंटेन रहती है बच्चों, क्योंकि 78% में से देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर से ग्रीन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके इसको अपने न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स के तौर पे, और उसके बाद फिर उसको अपनी बॉडी में लेके आते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के बाद एनिमल्स में चली जाती है और एनिमल्स की जब डेथ होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो आप देखो इसका लेवल हमेशा 78.09% मेंटेन रहता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है 20.95% है, तो इसमें देखिए परसेंटेज इसकी भी मेंटेन रहेगी। किस तरह से, क्योंकि देखिए इसकी जब भी आप देखेंगे तो बेसिकली वो परसेंटेज मेंटेन रहेगी, ठीक है, और इसी तरह परसेंटेज ऑफ CO2 भी मेंटेन रहेगी। तो इससे हमें ये डेली लाइफ की एग्जांपल का पता चलता है। बहुत शुक्रिया क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।